मीना उसके भला डांट कहाँ मिलने वाली है। मैं तो पीटती भी हूँ, ये तो हाथ भी नहीं लगाते। नहीं मारते ना भैया। भैया मैं
Okay, good morning, everyone. I think most of the students have joined, so we'll start now. Okay, okay. I hope my voice is proper. If there will be any problem, just let me know. Okay. So we'll start. So in previous session, what we have done with the reciprocity. I hope that is clear with everyone. What is the reciprocity? Now the next we will continue with the density and this. Connectedness. Now, what is the density? Why we find the density of a particular network? See, when we found this that is a what you can say. Wait a minute. Okay. When we had calculated the reciprocity of this that is a network, a particular social network. Then why what we try to find it out? It was basically for the asymmetric relation, and we try to find out how many mutual relations are there, how many uh, uh, asymmetric relation, that is a one-way relation is there, and how many nodes are normal. Basically we are trying to find out that in a particular network how many how many reciprocated, means the mutual relations are, the average mutual relations are there. So that rate we try to find it out. So that was basically a reciprocity relation, and reciprocity is basically only used for the it is only used for the what you can say, it is only used for the this one, that is a asymmetric relation. But if we want to uh, overall, if you want to overall this if you want to examine, or if you want to analyze the overall network, then how you are going to analyze it? Okay, so if you want to analyze the overall network, then for analyzing the overall network, whether it is a symmetric network or a symmetric network, we can use the density and connectedness. Sorry. So when you are using the density, basically what density does, in case of density, you can find out the entire connectivity of the network. मतलब आपका पूरा का पूरा नेटवर्क में कितना कनेक्टिविटी है, एक मतलब अगर 1000 लोग हैं नेटवर्क में, तो उसमें what are the how many people are connected with each other, so that we can the rate we can find out, that average rate we can, like 1000 में से 900 लोग ऐसे हैं जो सब एक दूसरे से connected है. So it will be like a density of a network. So if you want to analyze such thing in a network, then we can use the then we can go for this one, that is our density of a network. Okay, so this is basically density. Now when you want to find out the connectedness is basically density में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी. मतलब अगर if A is a friend of B and B is a friend of A, or if A is connected in मतलब A is related with the B, then only it will be connected, it will be considered. मतलब
It is a direct connectivity. While connectedness में आप वाया वाया भी connected हो, like A is a friend of B is a friend of C, then A and C can become friend, बराबर. So अगर वहाँ पे कैसे भी connectivity है, तो वो भी consider होगा connectedness में. So that is the difference between the density and connectedness. So density always talk about the direct relation, like A is a friend of B, then only it will be considered. While connectedness consider uh, via connectivity also. Like if A is a friend of B, B is a friend of C, then A and C can become friends. There may be possibility of their connectivity via B. Okay, so this is connectedness. So that is the difference between the density and connectedness. I hope that is clear to everyone. So for this unit, there will be notes also, a theoretical part also, like whatever I'm saying right now, that is a theoretical concept. So when I will share the notes, you will get that the theoretical concept of that unit. While the entire thing, whatever we are solving, this SNA problem will be a different doc. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका प्रॉब्लम का डॉक मैंने अलग से बना के रखा है, जिसमें सारे यूनिट्स के प्रॉब्लम्स हम लोग ने इंक्लूड किए हुए हैं. और जो थियरी है दैट आल्सो आई विल शेयर. सो टुडे आई विल शेयर विथ यू पीपल बोथ द थिंग्स. ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू विथ दैट. ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. साइली, यू वेंट टू सम फ्लावर गार्डन क्या? Because your the picture you which zoom picture which you have set, this kind of flowers are not available easily. I think it's from some flower garden in Nasik में. When we went to there, we have seen such a flower. और तेरा अभी तेरा ये डीपी मेरे एकदम स्क्रीन पे ये हुआ है. एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? Just let me know whether screen is visible or not. Is it visible? Visible. Visible, huh? Okay, from my side. Okay, okay. Okay, so now we'll see how to find out the density of a network and all. So as I said that the density you can find it out for both the things, that is a asymmetric and symmetric network both, while the reciprocity was only for the symmetric relation. Sorry, asymmetric relation. So that is the difference between this one, that is a symmetric and asymmetric. So just remember that thing, that this density connectedness you can analyze both kind of network, symmetric as well as the asymmetric network. Now, what is the difference between these two while analyzing the symmetric and asymmetric network, that we will see. So this is nothing but our network. Now this is a asymmetric. Directed graph always represent a asymmetric network. So what is the formula? Formula for density of a network: number of existing edges divided by the number of possible edges of okay. So the formula remains same for the directed as well as the undirected graph. So there you have to count the number of existing edges divided by the number of possible edges. Okay. Now only thing is there, you have to take care of
Okay, any one of you, I will just make a co-host so that if anybody is there, you can just admit it then. Uh, yes, I am making you as a co-host because मुझे बार बार फिर इधर आना पड़ता है मोबाइल से है तो लैपटॉप से है तो प्रॉब्लम नहीं रहता तो yes if there is anyone in waiting room you can just admit that student. So when you are finding the density of a network, basically what is the density of a network? It is the number of existing edges divided by the number of possible edges. So the formula will remain same whether it is a directed graph or undirected graph. But when you are finding the number of possible edges, you have to the thing change in case of directed and undirected. Yes, please mute yourself. So how the formula will change? See, the number of existing edges will remain same. You have to just count the number of edges. Like here, you have to just manually count the number of edges. And when we will do the practical, there are a method in a R by using which you can count the number of edges. So here you have to just count the number of edges. So the counting you can done. Number of possible edges. So number of possible edges will differ in case of directed and non-directed graph. So in case of directed graph, the number of possible edges is going to be n into n minus 1. Okay? Where n is nothing but a number of nodes. While in undirected graph, अगर graph आपका undirected है like that, so वहां पे आपका क्या हो जाएगा number of possible edges n into n minus 1 डिवाइड बाई 2. सो जो डायरेक्टेड ग्राफ था उसमें सिर्फ डिवाइड बाई 2 करना है यहाँ पे क्यों क्योंकि यहाँ पे जब आप अनडायरेक्टेड ग्राफ लेते हो ए ई एंड ई ए इज द सेम एज बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन इसलिए जितना भी एजेस है उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं हम लोग मतलब नोट्स के हिसाब से ठीक है और यहाँ पे हम लोग क्या क्या है कि सी टू डी एंड डी टू सी जैसे यहाँ पे है सी टू डी विल बी वन एज एंड डी टू सी विल बी वन एज तो इट विल बी काउंट डिफरेंटली सो इसके लिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ एन इंटू एन माइनस वन रखते हैं आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डायरेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस का फॉर्मूला होता है n into n minus 1 while in undirected graph it will come n into n minus 1 divided by 2. Now here when you are finding this number of possible edges, what you have to do in this number of possible edges, n is nothing but a number of nodes. Nodes मतलब ये A, B, C, D, E, F जो भी है. So here first we have find out the number of existing edges. So the number of existing edges was nothing but a 11. Number of possible edges is n into n minus 1 where n is nothing but a number of node. So यहाँ पे node कितने हैं 4, 5, 9 बराबर so 9 nodes है so 9 that is an n into n minus 1 that is 9 into 8 बराबर so it will become 11 by 72 so इस नेटवर्क का जो डेंसिटी है वो कितना है 0.15 है is it clear so this is how you are finding the density of a you are finding the density of the asymmetric relation अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक है लाइक दिस तो इसमें क्या होगा आपका नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया नंबर ऑफ एजेस हो गया 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एजेस हो गया 5 divide by number n into n minus 1 divide by 2 so n into n minus 1 divide by 2 करोगे तो यहाँ पे number of nodes कितने हैं 5 है 5 into 4 that is 20 divide by 2 that is 5 divide by 10 that is 0.5 मतलब इसकी कनेक्टिविटी रेट कितनी है 50% की कनेक्टिविटी मतलब इसमें 50% लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड इज इट क्लियर so that is basically a density of undirected graph ठीक है कहीं कहीं पे आप क्या देखोगे किसी किसी बुक में अगर आप बुक रेफर कर रहे हो तो वो क्या करते हैं ये जो टू है ना यहाँ पे डिवाइड बाई टू है ना जो उसको ऊपर ले लेते हैं मतलब ऑब्वियसली बेसिक मैथमेटिक्स या तो आप ये इसको डिवाइड करो या टू को आप ऊपर ले लोगे तो ये वाले फाइव के साथ न्यूमरेटर के फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम 2 into 5 दैट इज 10 डिवाइड बाई 20 ठीक है तो भी आपको 0.5 आएगा so it is remain same आप कैसे भी करो don't be confused in that one I hope density is clear to everyone yes
I hope density is clear to everyone. Anybody have any doubt? You can ask. Unmute yourself and you can ask. Else we will go for the connectedness. ठीक है? So now the next one is nothing but we'll go for the connectedness. अब जैसे आप कनेक्टेडनेस ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? यू कैन सी द फॉर्मूला समेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू नोड आई, मतलब यहाँ पे मुझे एक एक नोड की कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, डिवाइड बाई n माइनस वन। बराबर, ये एक्चुअली ना ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये मोबाइल में मेरे चलो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करती हूँ। Yes. And so here you can see the connectedness of network. Here it is summation is like a summation I is equal to 1 to n, समझा? तो ये summation के ऊपर का है, I is equal to 1 to n, and this is the number of nodes connected to node I divided by n minus 1, where n is nothing but a number of nodes. Okay, so that is basically, I hope you people understood that. ये समेशन में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? I equal to 1 to n, मतलब हर एक नोड का आपको फाइंड आउट करना है। Then the formula goes like numerator is number of nodes connected to node I, मतलब आप जो नोड का ले रहे हो उसको कितने नोड्स कनेक्टेड हैं, कितने and then divide by n minus 1, where n is nothing but a number of nodes. So अगर आपने यहाँ पे A B C D E लिया हुआ है, ठीक है, if you have taken this A B C D E, तो यहाँ पे अगर आपने A B C D E दिस पर्टिकुलर नोट्स लिए हुए हैं, तो ये नोट्स में आपका क्या होगा, जो भी आपका ये नोड है इसमें क्या होगा, आपको ए का कनेक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट डेंसिटी सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेफर करता है, वाइल दिस कनेक्टेडनेस वाया भी रेफर करता है। तो यहाँ पे ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है और ई से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। वो सी से भी कनेक्टेड है, ए इज कनेक्टेड टू सी ऑल्सो वाया बी और डी, बराबर, मतलब ए इज कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड, बी से भी, डी से भी, सी से भी, ई से भी। तो ए कितने नोड से कनेक्टेड है? 4 नोड से कनेक्टेड है। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई n माइनस वन। n माइनस वन मेरा मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पे? 5। 5 माइनस वन कितना हो गया? 4। तो ये क्या हो गया? 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। देन प्लस एज इट इज अ summation, now we'll go for the next node. नेक्स्ट नोड मतलब B, तो B इज कनेक्टेड टू A एंड C डायरेक्टली, बराबर, और D से वो कनेक्टेड है वाया A एंड C, और वो B E से भी कनेक्टेड है, A के थ्रू भी कनेक्टेड है, और आप B से C के पास जाओगे, C से D के पास जाओगे, D से भी E के पास जाओगे, मतलब B is also connected with all other 4 nodes. So B के लिए भी क्या आएगा? 4, न्यूमरेटर में 4 आएगा और डिवाइड बाय क्या आएगा? n माइनस वन, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, एक बार आपने n माइनस वन फाइंड आउट कर दिया वो सेम रहेगा, बाकी सबके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या बी का, सेम वे सी, सेम वे डी, सेम वे ई, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें मोस्टली सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो इसमें क्या हो गया? 20 हो गया, 20 डिवाइड बाई 4 मतलब 5। इसका कनेक्टिविटी कनेक्टेडनेस वैल्यू कितना है? 5। और हमारा नंबर ऑफ नोड्स भी कितना है नेटवर्क में? 5। तो अगर कनेक्टिविटी वैल्यू इज कनेक्टेडनेस वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स, मतलब वो जो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? कनेक्टेडनेस इज क्लियर टू एवरीवन?
Anybody have any doubt? You can unmute yourself and you can. अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है. Thank you. अरे बहुत ठंडी है मतलब हमारा मुंबई तो ऐसे लगता ही नहीं है इधर नहीं. Thank you thank you. Yes, I hope it's done. Everyone is clear with that. अभी अगर आपको कनेक्टेडनेस वैल्यू फाइंड आउट करना है डायरेक्टेड ग्राफ, सो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है डायरेक्टेड ग्राफ में क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ. सो द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. अब आपको एक एक नोड की कनेक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो जब हम लोग जीरो व्हेन वी विल चेक जीरो, 0 to 1 आप जब जा रहे हो, 0 and 1 is connected with that, मतलब 0 is connected with the 1, correct. So 0 and 1 are connected with each other. Now next when you will go for the next one, नेक्स्ट वन 0 2 से कनेक्टेड है क्या? नो, बिकॉज 0 से 2 के बीच में कोई एजेस ही नहीं है और वाया भी किसी के वो कनेक्टेड नहीं है. सो देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन 0 and 2. नाउ 0 3 से कनेक्टेड है क्या? यस. 0 से आप 1 पे जा सकते हो और 1 से 3 पे जा सकते हो, मतलब 0 and 3 आर कनेक्टेड वाया 1. सेम वे आप 0 से 4 पे जा सकते हो, 4 से 3 पे भी जा सकते हो. मतलब आपको वहां पे मैटर नहीं करता कि आप कितने. ओके सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो डायरेक्ट इन डायरेक्टेड ग्राफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट कनेक्टिविटी. यस. सो 0 and 3 इज कनेक्टेड वाया 1 and वाया 4. सो दैट डजंट मैटर. आपको सिर्फ चेक करना है ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर वो कनेक्टेड है तो आपका एक वैल्यू बढ़ जाएगा, बस. किसके थ्रू कनेक्टेड है, कितना पाथ एग्जिस्ट है, दैट डजंट मैटर टू अस. सो यहाँ पे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बिकॉज इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, आई हैव जस्ट मेंशन दैट 0 and 1 डायरेक्ट कनेक्टेड, 0 and 4 is also direct connected. 0 to 4 direct there is edges, and 0 and 3 I have taken this path 0 to 4, 4 to 3, because that doesn't matter कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो, सिर्फ आपको वो कनेक्टिविटी में काउंट करना है. सो नोड 0 के लिए कनेक्टिविटी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी. 3 दो 1 से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, 4 से, मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड विद द 0 is nothing but a 3. Now we will go for the 1. So again 1 is connected with 3 directly. Uh, 1 is connected with 4. It is not directly connected, but via 3 it is connected. 1 से 3, 3 से 4.
Yes. So here you can see 1 to 3 is direct connected, 1 to 4 is connected via 3, and 1 to 0, अब 1 से 3, 3 से 0. ठीक है. तो 1 to 3, 3 to 0 भी कनेक्टेड है. मतलब 1 और 0 से भी कनेक्टेड है. तो मतलब 1 किससे किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू 3, इट इज कनेक्टेड टू 0, एंड इट इज कनेक्टेड टू 4. So again the connectivity value of node 1 will become 3. Now for the node 2, the connectivity value, from 2 there is no edges. ठीक है. As from node 2 there is no edges, means there is no connectivity for the node 2. So node 2 is not at all connected to anybody. So for the 2, the connectivity value is 0. So for node 2, the connectivity value is 0. Now we will go for the node 3. Node 3 किससे किससे connected है? So we will check for the node 3. So node 3 is connected with the 1. So 3 is directly connected with the 1. 3 is connected with the 4 also directly, and 3 is connected with the 0 also. So 3 का ऐसा है कि वो 1 से connected है, 4 से, और 0 से directly connected है. So node 3 के लिए connectivity value कितनी हो गई? 3 हो गई. ठीक है. Same way we'll find out the connectivity value for the node 4. Node 4 के लिए connectivity value कितनी हो गई? 4 is connected to 0 directly, 4 is connected to 3 directly, and 4 is connected to 1 by using the 3 or by using the 0. Yes, so 4 भी 0 से connected है, 3 से connected है, और 1 से connected. So 4 की भी connectivity value कितनी हो गई? 3. डिनोमिनेटर कितना होगा इसका? 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स कितने हैं? 5. 0 1 2 3 4 5 नोट्स है. तो 5 माइनस 1, मतलब डिनोमिनेटर अपना कितना हो जाएगा? 4. सो यहाँ पे सबकी कनेक्टिविटी को हम लोगों ने सम कर दिया. 3/4 प्लस 3/4, 2 का 0/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4. सो इट विल बिकम 12/4, दैट इज द 3. मतलब इसमें कितने, 5 में से 3 नोड्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली कनेक्टेड हैं ईच अदर के साथ. बाकी 2 का कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, इसके लिए इट इज 3. इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? Anybody have any problem in this? Yes, anybody have any issue in that? Okay, so if everyone understood the thing, this I will share this file with you people. I will just convert it into the PDF and share, so that if you are viewing a mobile also, that will not be problem. So अगर सबका हो गया, as I told you that you have to be ready with the pen and paper. So ये वाला ग्राफ बनाओ, और ये ग्राफ का मुझे आपको बताना है डेंसिटी क्या होगा और कनेक्टेडनेस वैल्यू क्या होगा. ठीक है, चलो जल्दी से ड्रॉ करो, तो मैं आपको ये पीडीएफ में कनेक्ट करके बता देती हूँ. फटाक से ड्रॉ करो, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं क्या मैं आपको ग्रुप में? ओके, सो तब तक मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देती हूँ. ठीक है, ये मैंने आपको शेयर कर दिया है. अब ये फाइंड करो, तब तक मैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको सेंड करती हूँ. एटलीस्ट डेंसिटी का तो फॉर्मूला सबको याद ही हो गया रहेगा. बराबर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एजेस, एक्सिस्टिंग एजेस काउंट करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस.
अब इसमें पॉसिबल एजेस का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस वन। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, बराबर। वो तो आप सबको याद ही है, फटक से फाइंड आउट करो डेंसिटी, तब तक मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको शेयर करती हूँ। एक मिनट।
Okay, density is 0.5 and connectedness is 5. Everyone is getting same? हाँ, thank you, thank you. बाबू और ठंडी है बाबू, सॉक्स नहीं निकालना बाबू. वो डोरेमोन को उधर रखो चलो. और जैकेट भी नहीं निकालो ना, वो ये मुंबई नहीं है बेटा, ये दिल्ली है, यहाँ पे बहुत ठंडी है. ठीक है. दिल्ली है, बहुत ठंडी है. Okay, so I hope that is clear to everyone. So if you will see how many edges was there, 5 edges was there. So 5 divided by 5 into 4, that is 5 into 4 when you are doing, that is nothing but a 20, divided by 2, that is 10. Yes, so the density is going to be 0.5 and all are connected with each other. So here you can easily guess that the connectedness value is going to be 5. Now I will give one directed graph. Just find out the connectedness value of that also. मैं आपको ग्रुप में ही सेंड करती हूँ. आपको उसका भी डेंसिटी एंड connectedness, you have to find out both. मुझे नहीं पता. और ज्यादा कपड़े गीले मत करो, एक तो इतना फॉग है, सूखेगा नहीं. Okay, I'm just sharing a unsymmetric relation also. क्या कर रहे हैं बेटा? क्या बेटू? बाबू आपको भी मेहंदी लगाना है? हाँ? मेहंदी लगाना है आपको? हाँ. तो रूबी मासी को बोल देना 2 बजे आने वाली है. जाओ जाओ जाओ, रूबी मासी को बोल के आओ, जाओ, मुझे भी मेहंदी लगाना है. मम्मा मैं बात भी लगाऊंगी. बाद में. पहले आपको एक फिर मैं लगाऊंगी. मतलब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? हाँ. मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली हो तुम ना? मैं मेहंदी नहीं पूछूंगी मैं. मम्मा क्या बटरफ्लाई बना के देना बोलना. बटरफ्लाई बनाने के लिए बोल रहा हूँ. हाँ, बटरफ्लाई. हाँ. बटरफ्लाई. अच्छा. बटरफ्लाई मेहंदी और इसके एक शावल. और इसके फूल के जैसा. बेटा तुम्हारा हाथ कितना बड़ा है, इसको क्या क्या लगाएगा तुम? फ्लावर भी, बटरफ्लाई भी. मम्मा
एक इधर लगा होगा, मम्मा यहाँ पत्ता बना होगा, पत्ता बना होगा, और इधर इधर बटरफ्लाई और नीचे सब उंगली में फ्लावर। हाँ, उंगली में फ्लावर। और दूसरे हाथ में क्या लगा हुआ तो ऐसा मछली। मछली मेहंदी वाली पागल हो जाएगी ना वो। मछली कौन लगाते हैं? हाँ, फ्लावर बना दिया। हाँ, ठीक और यहाँ पत्ते, ठीक। और इधर क्या बनाऊंगी बताओ? फ्लावर है, चूड़ी है, और चूड़ी ऐसा चूड़ी भी बनवाओगी तुम मेहंदी के हाथ में? वाह नाव्या, तुम्हारा डिजाइन तो एक से बढ़कर एक है बेटा। जैकेट पे पहना रहा, टी-शर्ट की पहना देना। मारोगे दो छापड़, इतनी ठंडी है, ज्यादा हीरोइन मत बनो, बिना जैकेट के रहना मत। तो जैकेट में ऐसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये मेहंदी इसीलिए थी, तो ऊपर ही कर लूं। एक इधर बनाऊंगी फ्लावर, और इधर बनाऊंगी हाथी, और इधर बनाऊंगी टॉली। टॉली वो यहाँ पे बहुत ठंडी है पापू, यहाँ बिना इसके रहना मत, जैकेट और कैप के, ठीक है? ठंडी लग जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ पापा, मम्मा, आपको क्या बता रही हूँ, मैं 11 सब ऐसा कर दूंगी, फिर ऐसा पूरा इधर भी हैंडी बना लेगा, पिको बना देगा, इधर पिको 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 बना देंगे। Okay, so I have shared one more directed graph. So फटाक से आप इसका भी डेंसिटी और ये फाइंड आउट करके बता दो मुझे. Then we will then we will wind up with the session. तो म्यूट पे करने दो, फिर बात करते हैं, ठीक है?
Yes, anybody find it out? फाइंड किया क्या किसी ने अभी तक? क्या पूछा है? अरे यार, मम्मा मेरे ऊपर रहती, मेरे पापा के ऊपर रहते। यस, किसी का हुआ फाइंड आउट करके? डेंसिटी, ओके, डेंसिटी 0.41, एक मिनट, yes, density is 0.41 and connectedness is 2.333. Connectedness, let me check. Connectedness, density is correct. Connectedness, one is connected to 2. It is connected to one is connected to 2, 3, and it is connected to 4 via 4 also via 3. So 1 का कनेक्टिविटी वैल्यू कितना हो गया 3, और अपना डिनोमिनेटर तो 4 नोट से 4 - 1 3, मतलब 3/3 होगा, ठीक है। प्लस 2 का कनेक्टिविटी किसके साथ है? तो 2 की कनेक्टिविटी किसी के साथ भी नहीं है, बिकॉज 2 में सारे इनकमिंग एजेस है। नाविया 2 मिनट चुप रहना बाप, 2 मिनट से बेटा, फिर मैं लेक्चर वाइंड अप कर देती हूँ, ठीक है? ओके। So 2 का connectivity will be 0. Why? Because all the edges to the 2 is a incoming edges. There is no outgoing edges. If there is no outgoing edges from the particular node, how it can be connected with anybody? Yes. Okay. Now we'll go for the 3. So 3 is connected with the 4 directly. 3 is connected with the 2 directly. अभी 1 से वो कनेक्टेड है या नहीं देखना पड़ेगा। तो 3 कैसे 4 पे जा रहा है 4 से, लेकिन उसका कुछ कनेक्टिविटी नहीं बन रहा है 1 से। तो 3 भी ऐसा होगा जिसका कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किससे है 2 से और 4 से, 1 से नहीं है। क्योंकि 4 ना तो 4 से कोई एज आ रहा है 1 के पास, ना तो 2 से कोई एज आ रहा है 1 के पास। तो 3 सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्टेड है 2 और 4 से, वो 1 से कनेक्टेड नहीं है। तो 3 का कनेक्टिविटी वैल्यू कितना हो गया 2, मतलब अपने आप पहला 1 का कितना हो गया था 3, फिर 2 का तो 0 था, फिर इसका कितना हुआ 2, बराबर। सो 3/3 प्लस 0/3 प्लस 2/3। उसके बाद 4 अगर हम लोग देखेंगे, सो 4 इज कनेक्टेड विद द 3 and 3 via 3 it is connected with the 2 also, बराबर। So 4 is connected to 3 and 2. It is nowhere connected with 1. So 4 का भी connectivity value कितना हो गया 2, मतलब अपना connectivity value कितना हो गया 7/3, बराबर। तो 7/3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, so 3 2s are 6, that is 2.33. Yes, so it will be 2.33. Yes, 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 Gautam. I hope एक्चुअली हाँ हाँ यस मैम, मैंने तो मतलब मिस्टेक कर दिया उसमें, 7/3 आया था, बट मैं डिवाइड प्रॉपर नहीं किया। ओके 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 ओके। देखो देखो तुम लोग का मैथ्स देखो, हाँ 7/3 भी प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहे हो, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एंड आई वन थॉट मोर 7 थिंग, यस वन मोर थिंग कि एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, वो तो ठीक है, और कोई भी वो ग्राफ नहीं आएंगे जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैं गूगल से कोई भी ग्राफ उठाती हूँ और वो देती हूँ सॉल्व करने के लिए। तो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, आप ये बिल्कुल सोच के मत चलना कि जो आपने अभी तक सॉल्व किए वही ग्राफ आएंगे, नो। एसएनए में मैं वो कोई भी नेटवर्क नहीं देती हूँ जो हमने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व किया है। तो आपको फंडा क्लियर होने चाहिए, और यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पूरा प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी मैं थियरी नहीं देती, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओके, सो वेरी गुड, आई थिंक यू पीपल गॉट इट। किसी को कुछ प्रॉब्लम है?
कोई जिसको कुछ नहीं समझा हो? Yeah, I think it's clear to everyone. So we will wind up today's session. आज पहला लेक्चर नहीं हुआ क्या आप लोग का? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। इसके लिए मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हो गया कि आज कॉलेज में छुट्टी उट्टी तो नहीं दी है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो that is clear. Now the next thing we will continue in the next session. So actually जो next पार्ट है that we will talk on centrality, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मतलब काफी जम्बलिंग है। तो कल आई थिंक सैटरडे अपना लेक्चर रहेगा, तो सैटरडे को हम लोग इजी वाला कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि उसी दिन एक्चुअली मेरे कजिन की शादी भी है, तो वो दिन थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इजी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड डे। हाँ हाँ, बोलिए ना फूफा जी। मैं अभी वही बोल रही थी, डेस्टिनेशन वेडिंग करना ही था तो आपको यही करना था, मुंबई आ गए होते। हमारे मुंबई में ठंडी नहीं है इतनी। बस बस खत्म किया, 1 मिनट।